Good morning, guys. Today is the third day, and I'm just going to inform you about my next visit. That is Lamai Beach. I am going because many people went there yesterday and they praised a lot. But because we were busy in the island trip, so we couldn't go. So I'm going alone, and nobody has woke up till now because everybody is sleeping. So I plan to go. So let's see how it would be because it's quite far and I have very less time because I have to go back around 10:45, so I have to be here around 10. So it's already 7:15 now. So guys, I just slow down the bike just to show you the view. It's too beautiful. The road is running alongside the sea and it is about to sunrise, as you can see. And the roads here are quite serpentine, just like that of Himachal Pradesh, so I'm not having any problem in riding the bike over here at high speeds also. But now I slow down just to show you. So okay guys, see you when we reach to some place. Enjoy the video till then. So guys, it was almost a way of 30 to 40 minutes, but I covered it within 15 minutes only. So I will show you. I asked some Gora person because even I was not getting the way. It was showing to turn right, but it's not there. So I just walking around now. So you can see the view of this. It's wonderful actually. So guys, this is the actual Lamai beach, which is located on the southern east coast of Koh Samui. And it is a popular destination known for its beautiful sandy beach, as you can see. और साथ में क्रिस्टल क्लियर वाटर विद रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, जो कि यहाँ पे देखने में लग रहा है. और यहाँ से कुछ ही दूरी पे अगर आप देखो, वो सामने जो आपको रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर रॉक्स हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस है कोह समुई में. और एक खास बात, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट बीच ऑन दिस आइलैंड कोह समुई एंड विच ऑफर्स अ मोर ट्रैंक्विल एक्सपीरियंस देन द बीजियर चांग बीच जो हम लोगों ने उस पिछली वीडियो में देखा था. और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं. इट इज़ अर्ली डॉन, सो काफ़ी टूरिस्ट नहीं है इस टाइम पे, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. तो सुबह सुबह का व्यू था, अच्छा था, रिलैक्स था. Just now came to PTT station because it was about to finish petrol. So I don't know what is happening because it's not going above 100 kilometers per hour. But anyhow, I'm moving with 90-100 only now. It's powerful, but not. I think so. They have set the speed limits. So right now I'm going for waterfall. See you guys there. This way it's too hilly, but anyhow, I reached this Swang Sao Thong waterfall. So we'll go have parked the bike here. Nobody is here to collect the fees anyhow because it's not even open early morning. So for parking they have amount, but it's okay. So it's 250 meters from this. रास्ता तो देख नहीं रहा, दौड़ रहा था, सोचा 500 मीटर है तो ज़्यादा चलना पड़ेगा. पानी की आवाज़ आ रही है पर है नहीं दिख रहा है. यहाँ बाइक का रास्ता था, या तो वहाँ से जा सकते थे. नीचे तो खाई है सिर्फ. चलो लेट्स सी. देखना भाई, इस रास्ता रस्सी लगाई है, समझ नहीं आ रहा चलने के लिए लगाई, मतलब बचाने के लिए लगाई है या किसी की टांग फंस के गिराने के लिए, क्योंकि इट्स टू स्टीप. पानी ये देखो, सारे इंतजाम करेंगे कस्ट वो हो भाई, टूरिस्ट गिरे ही गिरे यहाँ से हो. बट आई एम इन रश. So I won't advise to come during the rushy time because difficult है यहाँ पे. हम तो खैर हिमाचल के पले बड़े हैं, तो आदत ऐसे रास्तों पे चलने की, ट्रैक जैसे करने की. चलो 8 बजने लगे हैं अब गाइस. टाइम इज़ लेस फॉर मी, विल सी. तो गाइस फाइनली रीच द वाटरफॉल. दिस इज़ द वन. ऊपर तो खैर मच्छर भी हैं, कुछ खास मुझे लगा नहीं देखने वाला. तो ये कोई आई थिंक सो होली ट्री है. एक्चुअली ये लाइमस्टोन वाटरफॉल है, दूर से मडी दिखता है बट है ये क्रिस्टल क्लियर. तो गाइस हियर आई हैव रीच्ड वट खुनारम. इट वाज नॉट दैट फार बट ऑन टुवर्ड्स द रोड साइड ओनली. सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल. वी आर नॉट गोना गो इनसाइड बिकॉज वी आर लैकिंग टाइम एक्चुअली. सो आई विल जस्ट गिव यू सम फ्यू शॉट्स ऑफ दिस. हियर इज द गॉन्ग. And this is mummified monk actually.
So this is the under the decomposed remains of whatever is Dang Piasajoji and the Venerable ex-abbot of Wat Kunaram, Wat Kosamui. So I think we can read this, and this is for the Buddhists if they want to do the meditation. They have the well-preserved body for a famous monk who died over 40 years ago. Maybe this helmet is the one. ये देखो, this is like a chariot, I think so, for them. And here also they have Buddhaji, Jai Prabhuji. And this bigger one, it is usually closed, I think so. So guys, this was about this Wat Kunaram, and now we'll go towards another place. If I find otherwise, I'll go to room because it's already late for me now, I think so. I have to get ready, I have to pack the stuffs as well. So okay guys, see you around.